Assalamu alaikum, everybody. My name is Ores Taqir. I'm an educational and creative counselor here at Crescent Model. Alongside me is Sirzen. Sirzen has grown to become a rather somewhat of a famous entity at Crescent Model because he's been assisting students with their applications. And in particular, this time around, since we have had about 50 plus students apply for the LUMS National Outreach Program. So हमने सोचा कि एक जो former क्रिस्टियन के स्टूडेंट हैं एक्स क्रिस्टेंटेरियन लेट्स रीच आउट टू देम एंड सी कि एग्जैक्टली what their experience as someone who's part of the LUMS National Outreach Program looks like. So alongside us, we have Muneeb Ali. Muneeb, I'll let you take it from here. मुझे बताओ, like, tell us a bit about yourself. Assalamu alaikum everyone. So my name is Muneeb Ali, and I am an alumni of Crescent from 2022. और 2022 में मेरा A levels खत्म हुआ और उसके पीछे से बेसिकली उससे एटलीस्ट एक साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट होती है उसमें लम्स की तरफ जाने की और और मेरा इंटेंडेड मेजर जो है वो फिजिक्स है क्योंकि लम्स में आपको फर्स्ट ईयर में जो है अपना डिक्लेयर नहीं करना होता मेजर, सो मेरा इंटेंडेड मेजर अभी फिजिक्स है। उसके अलावा आई डिड माय ओ लेवल्स फ्रॉम क्रेसेंट, आई डिड माय ए लेवल्स फ्रॉम क्रेसेंट एंड यस एंड नाउ आई एम हियर। Fair enough, fair enough. So Muneeb, मुझे if you don't mind sharing, like, O levels के grades क्या थे? अच्छा, सो ओ लेवल्स में सो सो रीलिंग बैक अ बिट मोर, मैं हिस्ट बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। एंड आई जॉइन डायरेक्टली इन एट्थ और शुरू में आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, बट इन द एंड आई वाज एबल टू गेट वेल, नॉट बहुत ज़्यादा अच्छे क्योंकि देयर वर स्टूडेंट्स हु गॉट अबव मी, बट आई गॉट 8 स्टार्स। और उसके बाद ए लेवल स्टार्ट हो गया। A levels में I struggled a bit due to some reasons क्योंकि especially in A2 I had 2 part-time jobs जो मैं साथ साथ कर रहा था, ट्यूशंस पढ़ा रहा था और जिसकी वजह से मेरा जो ग्रेड्स हैं वो थोड़े अफेक्ट हो गए। I was hoping for 4 stars again, but I wasn't able to land them. I got 2 stars and 2 A's, but still alhamdulillah. Very nice, very nice. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, how much effort does it take to get 8 A stars in O levels and 2 A stars, 2 A's in A levels? अच्छा, क्या टिप्स है, क्या ये कोई कोई पढ़ी है, कोई नुस्खा है, क्या चीज है ये कि how does one make that happen? um, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक, अच्छा ये आपके साथ होता है जब भी आप ए लेवल्स में आते हो, आपको लगता है ओ लेवल्स बहुत आसान था, आप यूनिवर्सिटी में आते हो आपको लगता है ए लेवल्स बहुत आसान था। तो एट द टाइम इट्स नॉट दैट, बट लुकिंग बैक एट इट नाउ आई थिंक इट्स डूएबल। 8 स्टार्स इज नॉट लाइक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मार्का, but the thing is you have to start working from day one. That is the rule of thumb. That is something that you need to do. You have to start working from day one and build upon it aisa aisa, and inshallah it starts will not be a problem, definitely. Makes sense, makes sense. And अच्छा, so coming from a hips background, ये transition कैसी थी? Like, I understand you already mentioned कि start के अंदर you did struggle a bit, लेकिन how did you? So was it कि बस the amount of time you put into it? Was it something else? किस तरह ये एक transition अच्छा, थी manage किया? so coming from his background, मुझे ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो थी वो हुई थी इन साइंसेज एंड इन मैथ्स। उसके अलावा द वन थिंग दैट आई थिंक is personally, like something that is very important when it comes to studies is whether or not you actually enjoy it. So I actually really enjoy studying. I like maths, I like science, and that is why I was able to put in effort. I was able to enjoy that effort, and जिसकी वजह से I had an inexhaustible, um, well, bundles of hours that I could put in into it. बहुत ज़्यादा नहीं था of course, but still it was well something that I enjoyed और मुझे पता भी नहीं चलता था I was doing maths for 4 hours straight and things like that. But yeah, okay, starting also one thing that I picked up and never let go was reading. So I started reading English novels. I should have read more Urdu as well, क्योंकि मेरी उर्दू बहुत बुरी है which I'm realizing now. बड़ी मुश्किल से स्टार आया था उर्दू में और वो भी उर्दू बी में, तो सेकंड लैंग्वेज उर्दू में। तो
yeah, I think it was important कि मैंने पढ़ना शुरू किया, and that is something that helped me in my SAT score and definitely helped me in my interview for LUMS. मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। मुझे लाइक यू मेंशन्ड द एसएटी, यू मेंशन्ड अप्लाइंग टू लम्स। तो थोड़ा सा बताओ, लाइक हाउ डिड यू एंड अप अप्लाइंग टू लम्स? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स थी? Mm-hmm. सैट, फॉर इंस्टेंस, दैट यू गिव सैट, तो लाइक सैट के लिए कैसे पढ़ा? कि थोड़ा सा Mm-hmm. इसके एप्लीकेशन की जर्नी के बारे में if you could just share. So the journey actually started in A2. A2 start हुआ था, and तब भी एक प्लान था कि हाँ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है और सारा कुछ साथ साथ लेके चलना है. It was in A2 that I gave my first stat, and that was, well, unfortunately or fortunately, the only try that I gave. Or because मैं थोड़ा late हो गया था. I would suggest students to start a bit early to try giving a sat try if they are. Did I get disconnected? I think you did, but that's all right. कोई मसला नहीं है. So, you were saying कि हाँ, स्टार्ट यू वुड एडवाइस स्टूडेंट्स के स्टार्ट थोड़ा जल्दी करना चाहिए उनको, Yeah, प्रिपरेशन exactly. स्टार्ट की। हाँ, Hmm. सो और उसमें they या should try. हाँ, they should try giving it at least थोड़ा सा पहले, या फिर at least start preparing a bit early. Because I started it at the very last moment, at the 11th hour, और उसके बाद फिर फटाफट से थोड़ा accelerated था. और उसके बाद जो है मेरा सारा स्टार्ट हुआ with exams going on, with jobs जो मैं कर रहा था, उसके बाद university application. So my initial goal was to apply as Suresh भाई knows के US अप्लाई करने का था, and उधर भी काफी काम किया उसके लिए, and that is something I think is of value, at least to me, क्योंकि setting the aim the best. So हाँ, कहाँ पे था मैं? Yes, तो applying to US. गो So ऑन। went through that phase as well, और वो सारा कुछ जो था, that taught me a lot. Even though I was not able to get as much of a financial aid that I needed उन US universities वगैरह के लिए, but it was a valuable experience. It added a lot to my knowledge, a lot helped me a lot in realizing what universities want from me. And well, that is something I recommend to all the students as well. Like try to aim like the highest possible, or go for it, and you will not regret it. You will not regret it. मेक सेंस, मेक सेंस। तो सैट स्कोर आया क्या था फिर, लाइक फर्स्ट रैंक पे? अच्छा, सैट स्कोर, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था, बट पीपल से कि अच्छा था. आई गॉट अ 1430. So there's that. मेक सेंस, मेक सेंस। सो अच्छा, इंग्लिश और मैथ के साथ स्टार्ट में स्ट्रगल करते रहे, लेकिन आगे आके 1430 भी स्कोर कर लिया। तो ये क्योंकि साठ के अंदर तो प्राइमरली देयर इज इंग्लिश और मैथ। हाउ डिड यू प्रिपेयर Yeah. फॉर साठ? ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज की, एकेडमी ज्वाइन की, खुद से पढ़ा? 1430 के पीछे क्या कहा? अच्छा, 1430 के लिए, वेल एक्चुअली आई जॉइंड एन ऑनलाइन एकेडमी काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि विद एवरीथिंग गोइंग ऑन, माय A2 वाज वेरी वेरी हेक्टिक, और आई थॉट कि आई वुड नॉट गेट इनफ टाइम, या मैं दे नहीं पाऊंगा, अलग नहीं कर पाऊंगा अपने स्केड्यूल में से एक चंक सैट के लिए, एंड इट वुड जस्ट गेट डिलेड एंड लाइक मोर एंड मोर. I attended it was an online academy named Lama Prep, or it was actually run by an alumni from Crescent as well, who is at LUMS right now. और उनके थ्रू मैंने ये किया था. But after going through it, I realized कि काफ़ी कुछ खुद भी हो सकता था. और as in online resources आपके पास हैं, वो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं. खान एकेडमी बहुत अच्छी है, इंग्लिश के लिए बुक्स बहुत अच्छी हैं. उसके अलावा, वेल, देर तो, और उसके बाद साइंस. अच्छा, फॉर एल सैट आई हर्ड के जो मैथ्स है दैट इज अ बिट हार्डर, एंड द इंग्लिश इज like a bit less difficult as compared to the original SAT. और so that is something that the students need to keep in mind के थोड़ा सा ज्यादा मैथ्स के ऊपर फोकस करने वाले कर ही देंगे. If they are coming from an FSC background, they should be familiar with a lot of stuff.
FSC math is very expensive as compared to A levels. I've got to say that. ठीक है, makes sense, fair enough, fair enough. अच्छा, so originally, you did apply for, if like again, मुझे application क्योंकि याद है, so we did apply for financial aid, लेकिन Yeah, initially NOP के लिए हमने apply नहीं किया था. So exactly. मुझे लेकिन finally when we did receive an offer, when you did receive an offer, तो उन्होंने NOP की सिलेक्शन आई थी. What do you think? अभी अभी तक समझ आई है कि अच्छा इन्होंने NOP का क्यों दिया था, लाइक उसके पीछे वजह क्या थी, ये क्या रीजंस थे दैट लेड के एप्लीकेशन उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा ठीक है, यू नो व्हाट, हम जो एक जो हाईएस्ट कैटेगरी इस वक्त हम फाइनेंशियल एड की अवार्ड करते हैं, वी आर गोना गो फॉर दैट. व्हाट डू यू थिंक कंट्रीब्यूटेड लेड टू दैट? आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ये कब चेंजेस इस तरह की लेकर आए, क्योंकि मेरे साथ अलोंग विद मी देयर वर 2 to 3 वेल या 2 to 3 अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम एनओपी बैच जो हमारे साथ, जिन्होंने प्री सेमेस्टर जो इनका स्टार्टिंग वीकेंड था वो अटेंड किया था. उसके अंदर देयर वर लाइक आई थिंक 3 to 4 या 4 to 5 स्टूडेंट्स जिनको डायरेक्टली नॉर्मल एडमिशन से उठाया गया था. सो देयर वाज आई थिंक LUMS introduced a quota for students जो कि रेगुलर में से एनओपी में उन्होंने उठाने, एंड देयर वर लाइक 4 to 5 स्टूडेंट्स जिनको उठाया था. आई थिंक माई अच्छा तो हुआ ये था कि फाइनेंस अप्लाई कर दिया, सबकी फाइनेंशियल एड्स आ रही है, मैं परेशान हूँ कि यार आ नहीं रही, दे डिलेड इट सो मच. फिर उन्होंने कहा कि आके इंटरव्यू दें. आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, यकीन ही नहीं आ रहा इन लोगों को, चले जाते हैं. फिर जाके इंटरव्यू दिया. And I think my scores, my especially I think जो science का entry test था, that played a part in deciding um, well if I would get the NOP scholarship or not. और उसके अलावा I suppose जो मेरी application थी, as in the personal essay and the 2 questions that they asked, were well something that they value. Makes sense, makes sense. So collectively, before like you were, so firstly, I think that's a point, that's an interesting point that you bring up. कि regular में से भी उन्होंने select किए specific number of students. So what that means is कि directly जो NOP के लिए apply, it's not just कि सिर्फ NOP, second year के students भी जो apply करते हैं उनकी भी selection की possibility होती है for the LUMS National Outreach Program. Secondly, so there were 2 essays in the application. एक SAT हो गया, उसके अलावा एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर पांचवी चीज एक इंटरव्यू. यू आर सेइंग ये 5 कंपोनेंट्स थे दैट यू हैड टू जस्ट एब्सोल्युटली नेल फॉर यू टू बी एबल टू Exactly. मेक श्योर के like LUMS NLP के लिए क्वालिफाई कर सको. Yeah. Let's break these down in bits थोड़ा सा हम ना. एसेस के ऊपर कितना टाइम लगा था, कितनी एनर्जी लगी थी? एसएस के ऊपर बहुत एनर्जी लगी थी, क्योंकि आई अप्लाइड फॉर यूएस और उसके अंदर देयर वर टन्स ऑफ एसेस. आई वाज इमर्स्ड इन एसेस फॉर लाइक 2 to 3 months, और कुछ नहीं, 2 months. और वो लाइक और बहुत कुछ रहा, बट फॉर लम्स ओनली आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट लाइक गोइंग थ्रू दैट 2 months experience of doing all those essays for all those universities helped me a lot in understanding how to write essays वगैरह, और that is something that actually helped me. ठीक है, मेक सेंस. सो 2 महीने की एफर्ट ऑलमोस्ट लगी एसएस के ऊपर, Hmm. 2 महीने की ही ऑलमोस्ट एफर्ट लग गई स्टार्ट के ऊपर, और लाइक इफ Exactly. आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है. Three साइंटिफिक एप months ish. 3 मंथ स्टार्ट के 3 months ऊपर, ish. ठीक है, हाँ. मेक सेंस, मेक सेंस. साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट का थोड़ा सा लाइक इफ यू कुड शेड सम लाइट ऑन इट, ये ठीक कैसा है, होता है, ये ठीक है. है क्या, कहानी क्या? हाँ हाँ, अच्छा. सो द थिंग इज, मुझे लगा था कि एनईटी की तरह का होगा, कुछ ई कैट की तरह का होगा. पढ़ रहा हूँ, एफएससी की चीज़ें देख रहा हूँ, ठीक है. एक हफ्ते पहले से, या एक, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और आई वाज नॉट वेरी वेरी वेल. आई वाज होपिंग फॉर यूएस, और मैं नहीं चाह रहा था कि लम्स लम्स वाजंट माय फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है. बट it also depended upon like the amount of financial aid that I got from it. ठीक है. और तो well, so I gave it a week or so. और उसकी, क्योंकि मेरी पहले ही एनईटी के लिए भी प्रिपेयर्ड था, वो कर चुका था एनईटी के लिए अप्लाई, तो मेरी थोड़ी बहुत उससे भी तैयारी थी. तो एक for a week I exclusively studied for science aptitude test.
और एफएससी की चीज़ें देख रहे होंगे वो, बट द थिंग इज इसकी तैयारी जो है ना, जो साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट की, दैट स्टार्टेड फ्रॉम माय ओ लेवल्स, ठीक है। और बिकॉज देयर वाज लिटरली नथिंग जो कि याद करने वाला, इट वाज ऑल बेसिक, वेरी बेसिक थिंग्स एंड वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज that are sometimes left neglected by many students, और that is like छोटे छोटे concepts के जो आपके पास रूट्स होती हैं वो एक्चुअली होती क्या हैं, जो आपके पास वेल एस्टिमेशन किस तरह करनी होती है, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है, इस तरह की चीज़ें, लाइक थोड़ी बहुत लाइक ऑन द बैक एंड क्या हो रहा है, ये चीज़ें, और रेशोज वगैरह थी, कुछ एस्टिमेशन थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें, कुछ भी याद करने वाला नहीं था। इट वाज very a very new experience for me, and I actually liked it. वो अच्छा था। A lot of physics questions, I would say, somewhat थोड़े थोड़े से biology के, so a lot of physics, a lot of like basic maths. That was SADs, science मेक aptitude. सेंस, मेक सेंस। बिल्कुल प्योरली वो एक ग्राउंड लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स के ऊपर वो लेके थे इन टर्म्स ऑफ Exactly. साइंसेस के बेसिक सब्जेक्ट्स। फिजिक्स की आपकी ब्रांच पे थोड़ा सा, मैथ्स की ज्यादा उसमें थी, एंड ठीक है बायोलॉजी के ऊपर दे टच्ड अपॉन बिट। मेक सेंस। Hmm. अच्छा, सो स्टार्ट हो गया, दोनों एसेज हो गए, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, देन देयर इज द इंटरव्यू। इंटरव्यू कॉल आई, तो क्या क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थी, तैयारी कैसे की, हाउ डिड द इंटरव्यू गो, हाउ लॉन्ग वाज इट, उसकी जरा थोड़ा हाँ। बताओ। हम्म। अच्छा, सो इंटरव्यू के लिए कॉल आई एंड दे वांटेड मी एंड माय पेरेंट्स टू कम। So there was that. My parents were a bit nervous, लेकिन मैं, I don't know why, I was just a bit excited कि हाँ यार, first interview, it feels like a job interview and I'm going to nail it, ठीक है, और बस उड़ा दूंगा। तो I actually didn't prepare much. I was like, I will go and be myself, and I think that is something that actually worked. Or the interview was, for my parents it was like 20ish minutes, for me it was 20ish minutes as well, इतना लंबा नहीं था, छोटा सा था। They didn't ask anything related to academics. They asked me what my goals were, why I wanted to study, what I wanted to study. They asked me somewhat like very thick questions relating to my intended major, physics था। They asked general relativity और special relativity में क्या फर्क है, a very thick question, like किसको नहीं पता होगा, like at least जिसको थोड़ा साइंस का वो है तो उसे पता ही होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इतना ज्यादा नहीं था, जस्ट आई वाज ऑनेस्ट, आई वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड about my value, about the things that I valued, about what my goals were, what I wanted to do, how I am managing, what I am managing. They were basic because they were asking for like financial aid के लिए ही था सारा, एनओपी के लिए ही उन्होंने, एनओपी सेंटर में ही हुआ था मेरा इंटरव्यू, और वहाँ पे आई स्टिल डिडंट रियलाइज कि एनओपी मिल रही है या जो भी। तो वहाँ देयर वर अदर स्टूडेंट्स एज वेल विद मी, जिनको बुलाया हुआ था वहाँ पे, लाइक 5 स्टूडेंट्स विद फाइव ऑफ देयर पेरेंट्स वो आए हुए थे। I saw one of them like in actually being admitted to LUMS, उसको भी आना भी मिली, तो उन पांचों में से एक वो था। I think there would have been more अलग अलग दिनों पे बुलाए होंगे, and because there were like at least 5 students or so जो उन्होंने रेगुलर में से निकाले थे। The interview I think went well. I was able to make them smile a bit, ठीक है। I think, and I think it is something important, gives a positive impression, like be yourself, enjoy it, enjoy the interview. मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है, पेरेंट्स से सवाल जवाब पूछे थे किस नेचर के लिए, या वैसे इनकी बस प्रेजेंस के लिए था? उनसे उनसे भी वेल उनसे काफी सिंपल से क्वेश्चंस पूछे थे, कि लाइक फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे, कि ऐसे ऐसे हुआ हम्म। और फिर क्या हुआ, एंड थिंग्स लाइक दैट, व्हाई डिड यू एंड अप द वे यू एंडेड अप, और इस तरह सारा कि कैसे, पूरी स्टोरी। फेयर इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। मेक सेंस, मेक सेंस। तो चलो फाइनली लेटर आ गया एनओपी का। आई रिमेम्बर दैट कॉन्वर्सेशन, मुझे लेटर, यू या सेंट मी दैट लेटर, एंड देखा है कि अच्छा एग्जैक्टली, ये आई वाज लाइक, लाइक कि ये क्या। ये क्या हुआ है, लाइक अप्लाई भी नहीं किया था एग्जैक्टली। तो। अच्छा, सो मुझे लाइक थोड़ा सा, लेट्स लेट्स डाइव अ बिट डीपर ऑन द लेटर। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ट्यूशन फीस आपको कोई नहीं पे करनी पड़ी, देयर इज या जीरो ट्यूशन फी। या
आई थिंक यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। एक तो आपकी Yep. एप्लीकेशन की कॉस्ट आई थी, देखो 60 की आपकी हम्म, कॉस्ट आपने इंकर की। आपने जो इनिशियल एप्लीकेशन की थी एक सर्टेन अमाउंट वो आपने इंकर की। एक इनिशियल कोई सिक्योरिटी आपसे उन्होंने ली होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई सर्टेन Yep. अमाउंट की। कितनी लाइक अच्छा, सो सिक्योरिटी हाउ मच लाइक कितनी को अमाउंट अप कर जाती है सिक्योरिटी इफ यू। It was 40. It was 40K. ठीक है, सो 40,000 की एक उन्होंने सिक्योरिटी ले ली। इज देयर Yes. सो ट्यूशन फीस नहीं है, इज देयर अ बिल दैट यू इंकर ऑन अ सेमेस्टर बेसिस और ईयरली बेसिस? कोई इस तरह का कोई Not आपको एक आते हैं? literally कोई nothing. जिल्च नाडा Just जीरो? one thing. हाँ। Just for to get my stipend, semester stipend, I have to fulfill a requirement. जो NOP वाले हैं, they are working with student success. जो LUMS के अंदर काम करता है, and they have certain programs, certain seminars, certain workshops, जो कि मैंने attend करनी होती हैं, and if I am not able to attend the minimum threshold of those seminars, और उनकी मेरी attendance पूरी नहीं है, so they do not release my stipend, so that is something that I have to like take care of. इतना मुझसे मसला नहीं है, थोड़ा सा बस एक दो 4-5 सेशंस होते हैं सेमेस्टर में। ठीक है, मेक सेंस मेक सेंस। सो अच्छा, सो खर्चा कोई नहीं है सेमेस्टर का, इनफैक्ट स्टाइपेंड है उल्टा आपको पे कर रही है। हाउ मच डज दिस स्टाइपेंड ऐड अप टू फॉर नॉर्मल एंड लाइक uh, कैन? I suppose I don't know if it's different from for all for different students. I think it is. Is it? I'm not sure. मुझे लाइक आई डोंट थिंक इट इज, बट लाइक एक स्टैंडर्ड मुझे आई एम नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली स्टैंडर्ड इस वक्त अच्छा। स्टाइपेंड है क्या। Uh, सो इफ यू डोंट अच्छा, माइंड so शेयरिंग दैट। हाँ, I get a 20 per semester, 20K, 20,000. ठीक है And ठीक है, हाँ, मेक like it सेंस। is, हाँ, मेरा पेट्रोल में से ज्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन चले, like better than nothing. मेक सेंस, दिल को तसल्ली के लिए एक अच्छा फिगर है, हाँ, ठीक है। हाँ, फेयर exactly. इनफ, मेक सेंस। सो यानी खर्चा आ रहा है लम्स के ऊपर -20,000, 20,000 रुपए। Exactly. लाइक एक हर Exactly. 3 महीनों में 20,000 रुपए, लाइक 3 to 4 months का आपका एक सेमेस्टर है, सो 20,000 आपके पास आ जाता है। दैट्स अ नाइस बिल, दैट्स अ नाइस बिल टू हैव। Exactly. मेक सेंस, ठीक है। तो अच्छा, टुवर्ड्स this last ना थोड़ा सा जरा 5 to 7 minutes we're gonna spend this talking about your experience at LUMS. Um, so Mhm. I am not diving deeper into how did you select your intended major. इसके लिए ना हम एक अलग से conversation, I think that calls for a whole 30 minutes की एक candid conversation कि अच्छा ये exactly physics वाला कहाँ से बना, ये कहाँ से interest develop हुआ, and how to select your intended major. But at the moment, I would want us to focus more on if you could just like briefly touch upon it, कि now with this experience मेजर किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए एक स्टूडेंट को, और जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ द लम्स कम्युनिटी एज एन। Acha, so I suppose LUMS experience academically is like something I really enjoy. That is because ke, like very cutthroat, or I think that is something I actually very enjoy, because I want to be in an environment where I can grow, where I can learn from other people, and labs provided me exactly that. In the very beginning, we had a pre-semester session that was about a week long, और उसके अंदर they especially give you certain workshops on socialization NOP के लिए, NOP students के लिए, जिसमें सिर्फ NOP students होते हैं, और freshman NOPs, और उनको बुलाते हैं, and there is a whole session on how to socialize, how to give presentations, because that is something that on NOP students like suffer a bit on, ठीक है, थोड़ा सा उन्हें difficulty होती है। मेरे लिए इट वाजंट दैट मच, और क्योंकि साइंस लाइक एसएससी से हूँ, साइंस स्कूल से, लम्स के, तो हमारी प्रेजेंटेशन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती भी नहीं है, बट आई डिडंट स्ट्रगल विद देम बहुत ज़्यादा वैसे ही। तो देयर इज दैट, तो वो ट्रांजिशनल फेज वो आपको वो गो थ्रू करवाते हैं। देयर इज ऑल्सो ओ वीक, और उसके बाद फिर सेमेस्टर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग विद द सेमेस्टर काफ़ी अच्छी, आई सपोज टीचर्स, तो आई एक्चुअली, I think I respect and I think I value the teachers a lot.
बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है लर्निंग के लिए। थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा एक्सेलरेटेड है, बट इफ यू मैनेज प्रॉपरली, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल लर्निंग दैट, लेकिन दैट इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स नीड टू get it ऐसा ऐसा move on करें। For deciding your major, I think it is important के um, like अच्छा, फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू लम्स, उनके लिए तो शुरू में तो इजी सीन है। आप ओ लेवल्स में साइंस रख लो, या जिस बिजनेस साइड पे जाना है बिजनेस का कर लो, और पहला साल आपके पास पूरा फ्री है in order to ठीक है। सो लम स्टूडेंट्स हैव दैट लिबर्टी। तो but once you are in LUMS, it is abhi bhi students, some of the students are not decided upon what they want to do, but I think they give you a fairly good taste, a flavor of everything, and most of the students do they want to do। और शुरू में आप वैसे भी थोड़ा बहुत like change कर सकते हो LUMS में भी ना। Once you are, even if you are in have taken up have adopted a certain major, आप फिर भी थोड़ा बहुत शुरू में चेंज कर सकते हो, but that's not recommended, थोड़ा सा उसमें नुकसान होता है। तो better you decide on your own शुरू में। For me personally, I think the most important thing when choosing a major is your interest, और interest के पीछे जाओ। And everyone at LUMS will tell you the same, they will tell you कि स्कोप जो है वो आप खुद बना लेते हो। बायोलॉजी वाले कहेंगे कोई मसला नहीं है, हमारे पास इतनी जॉब्स हैं, आओ। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बहुत काम हो रहा है। डबल ई वाले कहेंगे चिप्स बन रही हैं बहुत ज्यादा। फिजिक्स वाले कहेंगे फिजिक्स ही है हर चीज। सीएस में तो खैर बहुत ही बच्चे जा रहे हैं, दे डोंट नीड मच कन्विंसिंग, तो देर है। Makes sense, makes sense. So to sum it up, ठीक है, like although you did not like ठीक है, you did not end up 2000 miles away from Pakistan, but still the एक start like you certainly don't seem to regret the decision, like financially be and otherwise the environment itself has allowed you, has provided you with immense amount of opportunities to allow you to excel as an individual। और टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, लोग अच्छे हैं इर्द गिर्द। पढ़ाई टफ है, कंपटीशन है एक उस सेंस के अंदर एक और मेहनत करनी पड़ती है, ये काम Exactly. पूरा लेते हैं अपने। Yeah. But overall, Yeah. collectively, that does add to your growth as an individual, and you would not exchange this experience for any other one. Is that would that be an appropriate summary? That would be ठीक है, makes sense, makes sense. Last question. मुझे बताओ any tips for individuals who are applying to LUMS, who are applying for maybe BSc Physics, कोई अगर like students के साथ if you were to share just a few tips or if you would want to share something with them. Last uh, words, last thoughts. for students who are applying. For students who are applying to LUMS, I would recommend ke start reading, start improving your English. That is something that helps a lot. If you are not good at English, you have to be very, very good at something else. For NOP students especially, there were students who were not good at English, but they absolutely excelled at another field. There were some students who had gotten 100% in their FSC marks in maths, or even though their English wasn't that good, they were still selected. So either there's this niche field that you absolutely excel in, or there is a mix of everything. And I think for me, it was very helpful to be able to have a strong grip upon English. It helped me a lot in SAT. It helped me a lot in the interview, in the personal essay, in everything. So in general, LUMS experience may helpful रहता है in order to know English. Second thing I would say कि like यार first पहले दिन से करो काम, ठीक है। Don't leave it for the last, or like slow and steady wins the race। ऐसा ऐसा करते जो कोई मसला नहीं है, but never don't slack। For physics majors, one thing I would like to say to them is कि maths पे grip अच्छी रखो। maths important है। Integration, differentiation, you need to know those things, they are very valuable once you get into the field।
Makes sense, makes sense. With that, I am going to call an end to the session. Muneeb, thank you so much for the time. Or it was wonderful to catch up after this long a period. उसके बाद हम after Yeah. you like in लफ्ज इतना I can share that I can say that from my experience as well कि लफ्ज इतना मसरूफ कर देते हैं आपको कि और किसी चीज के लिए ना आगे पीछे टाइम नहीं बचता. So thank you so much for the Yeah. time. Or You're welcome. inshallah, let's touch base soon and looking forward to having conversation with you again. Inshallah. Thank you so much, sir. Thank you so Mhm. much for having me. Or with that, I'm going to call an end to the session. I hope this was helpful. Or looking forward to talking to you again. I'm just मैं अपना I'm going to stop recording.